ओके, हमारा खुद का वीडियो अगर शूट करना है, जब तुम वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो यूजिंग ओबीएस स्टूडियो और तुम्हें खुद का भी वीडियो चाहिए स्क्रीन पे, राइट, वाइल टॉकिंग, तो कैसे करेंगे हम वो? ऑब्वियसली ओबीएस वीडियो अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसको ओपन कर लीजिए। ओबीएस वीडियो स्टूडियो अगर ओपन कर लिया है तो उसमें यहाँ पे सोर्सेस बटन रहेगा, ठीक है, सोर्सेस, यहाँ पे ऐड सोर्सेस करना है, या फिर यू कैन ऑलवेज गो टू सेटिंग्स में जाके सोर्सेस में जाओ, सोर्सेस से ऐड सोर्सेस करो, ठीक है। अभी तुम्हें खुद का वीडियो ऐड करना है, सो यू गो टू वीडियो कैप्चर डिवाइसेस, ठीक है। सो मैं इसको रिनेम करूँगा, ओके, माय वीडियो कैप्चरिंग, मुझे ये ठीक लगता है तो मैंने ये नाम दे दिया। यू कैन मेक इट वॉट एवर यू वांट, ठीक है। तो इस नाम से यहाँ पे एक सोर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो माय वीडियो रिकॉर्डिंग। तो अभी फिलहाल मेरा जो है मेरे में शो कर रहा है, बट वी गो एंड फाइंड सेटिंग वेयर वी कैन चेंज इट, इफ यू कांट वी कीप इट एज इट इज, राइट। अदरवाइज ये डायरेक्टली वेब कैम से हो रहा है शूट, और अदरवाइज तुम इसको फ़ोन या फिर तुम्हारा वीडियो शूटिंग कैमरा जो भी रहेगा उससे अगर शूट करोगे तो तुम्हें मिरर इमेज नहीं मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स है, इंटीग्रेटेड वेब कैम यूज़ करना है या फिर आपने जो भी कैमरा यूज़ किया उसका यहाँ पे डायरेक्शन प्लेस करना है। मैं फ़िलहाल लैपटॉप का इंटीग्रेटेड कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ मैं, सो ठीक, ये ठीक लग रहा है मुझे, तो आई कीप इट एज इट इज़। अदरवाइज आप आपके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हो। कैमरा कंट्रोल, do we see here anything regarding mirror image? No, कैमरा कंट्रोल में कुछ मिरर इमेज वगैरह नहीं है। टिल्ट, रोल, आइरिस कैप्चर, ठीक है, तो इसमें नहीं करना है। जस्ट एक कोई चेंज कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके। सो ये सेटिंग ठीक लग रहा है। अदर देन दैट कलर स्पेस, रेंज, बफरिंग ऑटो डिटेक्ट कर लेगा वो। अप्लाई रोटेशन डेटा फ्रॉम कैमरा नॉट नीडेड। फ्लिप वर्टिकली नहीं चाहिए, अगर हॉरिजेंटली मिल जाता तो अच्छा रहता। हॉरिजेंटली मिल जाता तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड करेंटली, बट वीडियो में अभी मिरर में शो कर रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस करेक्ट ओनली, राइट। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यू आर सीइंग एज अ लेफ्ट हैंड ओनली। आई एम लुकिंग टू लेफ्ट साइड, आई एम लुकिंग टू द राइट साइड। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, ठीक है, ये ठीक चल रहा है। यूज हार्डवेयर क्वेश्चन नॉट अवेलेबल, नॉट श्योर। यूज कस्टम ऑडियो डिवाइस, ये तो कर ही रहा है, कैप्चर ऑडियो ओनली, ठीक है, और नॉट नीड टू डू एनीथिंग मोर। अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू सेटिंग, और सेटिंग में हमें वीडियो कैप्चर डिवाइस, ठीक है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बट वी हैव एडेड इट ऑलरेडी and we want to change the background color, capture image media scenes, no, not needed। transform order में कुछ मिलेगा, flip horizontally, let's see this, horizontally, okay, okay, transform, flip horizontal, right, again going to transform, flip horizontal, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम जो आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो दैट आर चेंजिंग, सो कीप इट। अभी यहाँ पे जो नेम्स दिख रहे हैं ना आपको, ये ओल्ड, आपको जो दिख रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लिप, अभी ठीक दिख रहा है, सो ये उसके रिगार्डिंग है, नॉट ओके। आई क्लिक्ड ऑन द डिस्प्ले कैप्चर ना, सो आई हैव टू क्लिक ऑन द वीडियो कैप्चर, गो टू ट्रांसफॉर्म, ट्राई इट हॉरिजॉन्टली, इफ यू कैन स्क्रॉल इट साइड। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं सेटिंग पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो मैं दिखना चाहिए। नाउ आई हैव रेज्ड माय, ठीक है, लेफ्ट हैंड, so when I transform it horizontal, right here, so this is my left hand, but you are seeing it as a right hand, right, but while recording I'm seeing myself, uh, right, I'm seeing myself, that is my right hand. So in my video I'm feeling like it as I have raised the correct hand, but it is opposite hand, right. So in video it shows left hand, but it is my right hand only, right. This is my left hand, this is my right hand, this is my left hand,
in real, but what you are seeing is opposite, right? So make it flip again, right? We don't want like this, we want what it was looking previously. So this is my left hand, so it should look left hand, right? This is correct. Okay, so this is solved. Filters not required. Okay, we'll close this. Again I have to click right click. I'm going to Interlens blending method, blending scale, no show transitions. So Luma not required. Okay, what transition do we want? We don't want anything, but let's try our box bottom left. What it is? Let's try this one. Box bottom left. We don't want it. Show transitions, Luma fade properties, right? Hide transitions, none. Okay, full screen, source window capture. No, I want to go to filter. Luma key something. It is about something Luma key, right? Color correction. No, I don't want this section. I just want right click, transform. Can we have edit transform? Not required. Okay, can we go to properties? Selected this one, go to properties. Default color the same. Okay, filter not required. Go to no, I don't want to deactivate. I'm gonna activate this one. Right click, blend mode, blending, de-interlacing. I want to crop this. I want to crop this, and I again want show transitions. Box bottom left. So transitions, Luma. It is somewhere in transitions only. Properties. Again, I'm going to properties. Webcam. Resolution not need. Not needed. Not needed. Color range. Flip vertically. Apply rotation data from camera if hardware. Use custom audio mode. No. Right click. Hide. De-interlacing blend method. No. Blend mode. Screen. Okay, it seems blend mode. Screen multiply lighten darken. Okay, not needed. Blend mode light, blend mode multiply, blend mode subtract, blend mode add, blend mode normal. ठीक है. Okay, we are about to change that man. We are about to change scale filter by cubic. So transition fade to color. That was good. Transition is
Keep it right. In transition, duration, video, pop this out. Now I can go here and hide this one. Okay, I don't see this, but now I see this, right? So I can make it of any shape. Okay. But it is, but this option will show the, right? You want to keep it somewhere on the screen, you can keep it somewhere here, or you can always start recording, right? What was the option? You have to go to add sources, right? Or whenever you right click on this box, go to add, right click on the sources block. Suppose if you don't have anything over here, let's say let's capture, remove this one. Okay, window capture and audio capture. Okay, remove this one, these tools. But if you want to add a window capture, go here, go to W, window capture, you can add it. Okay, this is rename, you can rename it, you make it. Okay, but whenever you don't want to show the window, you can go and hide this, right? And go to right here, suppose you have added the my video capturing, right click over here, click it on the window projector source. Okay, so this video is your source of this video, so you can project it on your screen. So when you project it, let's cancel this, right click, project, this video will pop up in front of you. So this is right currently of this size, you can change it, right? How you can change it? Now you can change it, the size, you can scroll this, right? You can scroll it down up of whichever size you want. So I keep it this size. यहाँ पे जस्ट एक एक बात है कि ये विंडो जो है, जो OBS का विंडो है, तो ये तुम्हें शो करेगा हमेशा. ओके, you have to bear with this. I keep it over here. You can इसको आप मूव कर सकते हो whenever you want, scroll करके, right? So guys, this is for this OBS setting, OBS video recorder settings. Okay, so I think थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ये वीडियो guys. तो let's go to our next video. So इसके लिए यहीं तक हम वीडियो रखेंगे. ओके, ऑलरेडी इट इज 15 मिनट्स. सो होप आपको ये यूजफुल है. अगर नहीं भी है, अगर आप यहाँ तक है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिला होगा. सो मेक सब्सक्राइब द चैनल, राइट? यहाँ तक आए हो, कर लो सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना. कुछ अच्छा ना लगे, कुछ वीडियोस बनाने हैं तो कमेंट भी कर देना, ठीक है? सो सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय.